Sir, Next screen topic is share the maybe, sir. yes. Next unit is the per It's- unit system. As you know, all the calculations, all the analysis in the power system is done on per unit basis. Means some you can say in the power system, complex power system, number of components are there, number of elements are there. Means it may be synchronous, it may be generators, it may be transformer, transmission lines, and load. So, and number of, not a one generator, there can be number of generator, number of transmission line, number of transformers. So, and each may be at different rating. Means rating, for example, let us have this. Here you see one generator is here, another generator is here, number of transformer 1, 2, and it is a transmission line. But in fact, there will be several such systems. Several means the transmission line is not one, or number of buses are not only two, number of buses may be say 100. So the system is very complex in that case, and each may have the different rating. Say in this example, generator 1, this is its rating is 30 MVA. Generator 2, its rating is MVA rating is the 15 MVA. Generator 3, its MVA rating is 25 MVA. They are at different rating. And voltage level is also different. Transformer 1, this voltage level, generator 1, this is generating voltage at 10.5 kV. This is generating voltage at 6.6 kV. This is also generating power at 6.6 kV. So similarly, the transmission lines also. Transmission line means the here voltage on this side. On this side, say it may be 11 kV. On this side, it may be 33 kV. So in that case, and if we say the reactance calculating, then how to find out, how to do the analysis and everything. The reactance of this is say X1, reactance of this is X2, X3, X4. Then we know since the transformers are there, so reactance of this side will not be the same as the reactance on this side. Then we have to refer the reactance of one side to the another side, primary side to the secondary side. And if we want to calculation on the load side, then primary side to secondary side. If we want to calculate on this side, then secondary side to the primary side. So we have to refer the reactance, and we know how to convert reactance from, if the reactance on the secondary side on load side is 2 ohm, then reactance on the primary side will not be 2 ohm. It will depend upon the turns ratio of the transformer. That is the N1 N2. So that's why, and it is not possible to mention that it is not possible to always, because if the number of transformers are very large, then say reactance of this referred on this side, then reactance of this referred on this side, then it will be, and if the number of other transformers are there, then we have to refer. That's why we do everything on per unit basis. Per unit basis, we consider the common base, that common base of MVA, common base of kV, voltage means volt ampere, and means power. One base is taken for the power, that is for volt into ampere. Another base is taken for the voltage. So on the basis of that, if we take the common base, say in the whole system, if we take the common base of 30 MVA, then we have to convert all the impedances on 30 MVA base. Even if generator 2 it is at 15 MVA, we can convert on the 30 MVA base. Similarly, voltage of this side is 11 kV, voltage of this side is say 33 kV. And if we take a common base, or say generator, this is at 10.5 kV, it is generating at 10.5 kV, it is generating at 6.6 kV. Then, and if we consider common base means transformer on this side 11 kV, on higher side it is 33 kV, means 11, 30, then 30, 33, 11 according to the turns ratio. Say on this side we consider 11 kV, on this side we have considered as a 33 kV base. 33 kV on this side it will be again 11 kV base. Similarly, all the transformers means we can have a common base of according to their turns ratio. So then everything can be converted into the per unit. Means impedance of this can be converted into per unit, impedance of this can be converted into. So per unit means the base is same. If the base of voltage and power is same,
then nothing we need not to refer the load on one side to the another side. Then the analysis can be done. Now, how it is done? We consider a common base, as we told, common base say base of volt ampere. One thing is, since the transformer is a three-phase system, everything is on three-phase system. So what we can do, we can either convert that everything on we can analyze the system on per phase basis. So if the three-phase base is 30 MVA, then for each phase it will be 10 MVA. हर एक फेज का अगर टोटल 3 MVA थ्री फेज का अगर पावर 30 MVA है या 30 से मेगावाट है, तो हर एक फेज का, सिंस दे आर इक्वल, फेज ए, फेज बी, फेज सी, ऑल आर symmetrical, equal, so each phase volt ampere will be the 1/3 of the three phase. So that we can consider. So first of all, what we can do, either we convert everything on per phase basis, or drive the formula for three phase system. So we take a common base of VA and common base of voltage. Common base of VA divided by common base of voltage is the base current. Means अगर सपोज करिए 30 MVA बेस है, तो 330 इंटू 10⁻6 VA हमारा बेस हो गया पावर का. उसमें वोल्टेज का डिवाइड, वोल्टेज सपोज करो आपका ट्रांसफार्मर के एक साइड में 11 kV है, तो उस साइड की करंट का बेस होगा, या 11 kV का डिवाइड करके बेस करंट आ जाएगा, दूसरी साइड का बेस करंट अकॉर्डिंगली आएगा. So this is the base current. Now this is the base impedance, voltage by current. Base voltage by base current is the base impedance. And we can write from here also. This is the base voltage, base current is here. From here, base current, if you write base VA by base V, this formula will be there. Means base voltage and base VA. So if the impedance, say impedance is given 2 ohm, impedance, suppose on generator side impedance is given 2 ohm, then on one side means generator, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में सपोज जनरेटर कनेक्टेड है एंड उसका बेस इंपीडेंस 2 ohm गिवन है, then that we can convert on into the per unit impedance. How to convert into per unit impedance? जो हमारा 2 ohm है उसे बेस इंपीडेंस से डिवाइड कर देंगे. सपोज करिए जनरेटर आपका 10 मेगावाट का है और बेस आपका 20 है, तो वी कैन से 10/20.5 पर यूनिट है. ऐसे ही वोल्टेज हमारा 10 पॉइंट, सपोज करिए जनरेटर 10.5 kV पे जनरेट कर रहा है और बेस वोल्टेज हमारा 11 kV है उस साइड में, तो 10.5 डिवाइड बाई 11, ये हमारा क्या हो गया, पर यूनिट वोल्टेज आ जाएगा. पर यूनिट वोल्टेज 198 ऐसा कुछ आ गया. ऐसे ही इसका मतलब वॉट एवर एक्चुअल वैल्यू इज देयर, इफ यू डिवाइड इट बाय द बेस वैल्यू वी कैन गेट ऑन पर यूनिट वैल्यू. ऐसी इंपीडेंस अगर 2 ohm है तो बेस इंपीडेंस इससे डिवाइड कर देंगे. जनरेटर की प्राइमरी साइड में है तो ये वोल्टेज 11 kV होगा सेकेंडरी, और अगर ट्रांसमिशन लाइन के सेकेंडरी साइड में है, ट्रांसमिशन लाइन इज ऑन सेकेंडरी साइड, तो ये यहाँ 30 kV हो जाएगा. सो व्हाट एवर वी हैव टेकन द बेस, स्टार्टिंग में जो आपने बेस लिया उसके अकॉर्डिंगली everything will be can be converted into per unit. And we can write, as I told, we do everything on per phase basis. जैसे हमारा base current, here it is a base current, base VA by base voltage, so base, or it is on per phase, single phase मतलब per phase basis. And so voltage will also be on per phase basis. So voltage per phase basis means voltage from line to neutral. Okay, if it is a VA, then it is a V voltage. If it is a kVA, then it is a kilovolt. kVA and kilovolt. We can write in this form also. Normally, voltage is given in terms of kilovolt, and so then volt ampere, if it is in MVA, we can convert into kVA. Similarly, base impedance जैसे यहाँ है, base kV by base current. Base करने यहाँ kilovolt है तो यहाँ kilo ampere हो गया, like this. And it will be line to neutral always. This can be again if can from here kV, and if it is a, देखिए यहाँ kV and इसका स्क्वायर है 10⁻3 तो ये MVA होगा. So here it can be
like this. Either you can say kV square, here it will be MVA, or 1000 into this. So base MP, so this is the, or like this, MVA. So this is the, these are the formulas. Now simply, if you don't want to remember only these three. Remember only two or hardly these three. If you remember these three, there's no need to, then you convert whatever is given. If it is kV, convert into 10 power, multiply it by 10 power 3, convert into voltage. And if VA is given to the MVA, then convert into the VA. MV can be converted to VA, and then only the three formula can be remembered, and on the, and everything after converting to per phase basis. Agar line to line voltage given hai, then you have to convert line to phase voltage, line to neutral voltage. That is, after dividing voltage by under root 3, you will get the per phase voltage. So then you can put into this formula, and here you see per unit voltage is the actual voltage divided by the base voltage. Per unit MVA is equal to, per unit power is equal to actual power divided by base power. Similarly, the current, actual current divided by the base current. Similarly, the impedance, actual impedance divided by the base impedance. इस तरह हमने पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, और लाइन टू न्यूट्रल है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे अंडर रूट 3 से. अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन, सपोज वोल्टेज इज लाइन टू लाइन, देन कन्वर्ट इनटू द divided by under root 3, you will get the line to line voltage, line to phase voltage. Okay, so in this way we can do. Now sometime it is given that here, say for example, here in place of giving it into per unit, in place of it is giving on ohm actual impedance. Suppose generator is in place of saying its transient reactance is 1.6 ohm, it may be said that it is a 0.5 per unit. अगर ये पर यूनिट में गिवन है, और पर यूनिट एट इट्स ओन वैल्यू, पर यूनिट देखो, एक तो पर यूनिट मीन्स पूरा सिस्टम का आपने बेस लिया, पर पूरे सिस्टम के बेस का पर यूनिट के बेसिस पे आपने रिएक्टेंस निकाला. एक होता है हर एक का अपने बेस पे पर यूनिट गिवन है, मीन्स इसका इतना MVA इतने केवी लिया तो ये पर यूनिट, सपोज ये 0.5 पर यूनिट गिवन है. लेकिन हमें जब एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट सर्किट जब हम इसकी स्टडी करेंगे, तो हमें पूरे सिस्टम का बेस पे, क्योंकि पूरा सिस्टम का सेम बेस लेना पड़ेगा. ये हो सकता है इसको जब इंडिविजुअल जनरेटर डिजाइन किया गया है तो इसके अपने सिस्टम, अपने रेटिंग पे, अपने बेस पे पर यूनिट इसका पता लगेगा, इसके अपने पर यूनिट अपने बेस पे पता है. बट वी वांट व्हाइल डूइंग द, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन वी हैव टू टेक द base of common system. We have to base for the common base of the whole system. Then suppose ये 10.5 kV पे 0.2 per unit है, तो 11 kV पे कितना होगा. So while solving the numerical problem, then everything will be converted into the common base. Here, by the way, it is given in the impedance, then we can convert it into per unit at a common base. And if it is given on the per unit, suppose per unit means, before going to that, you can see this formula. Again, you can see this formula here. Per unit impedance is inversely proportional to the voltage square, and per unit impedance is proportional to the base VA or MVA. Means MVA per unit impedance is proportional to the MVA and inversely proportional to the voltage square. तो एक बेस मतलब VA के प्रोपोर्शनेट है, मींस 100 MVA पे अगर 2 ओम है तो अगर हमने बेस 200 MVA कर दिया तो कितना हो जाएगा. 100 MVA पे ये प्रोपोर्शनेट है ना, 100 MVA पे 2 ओम 2 पर यूनिट है, 100 MVA पे 2 पर यूनिट है, 200 MVA पे कितना होगा 100. सपोज करिए 100 पे 1 पर 0.1 पर यूनिट है, 100 MVA बेस पे अगर गिवन है 0.1 पर यूनिट है, तो 200 MVA बेस अगर हम मानेंगे उसका तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, उसी का प्रोपोर्शनेट है. अगर हम कहेंगे 11 kV पे इतना इम्पीडेंस है, 11 kV बेस
मानेंगे तो इम्पीडेंस जितना है, 33 kb है तो कितना होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ये होगा. तो दिस इज द फॉर्मूला. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट दिस फॉर्मूला. मीन्स पर यूनिट इम्पीडेंस गिवन, अगर पर यूनिट एक गिवन है और हमने न्यू पर यूनिट पे निकालना है तो इसके अकॉर्डिंगली वही ये निकल जाएगा. ओके, नाउ is there any question up to now before taking the numerical example? If you have question you can ask. Are you listening me? Hello? Yes, sir. So I think this is not per unit system you might have studied in the VTech classes. So if you go through, there will not be any problem in doing this. Okay. So let us have the numerical question this. So see, let us have first, it is a transmission line. Transmission line having 20.5 ओम पर फेस, इतनी इसकी इम्पीडेंस है. इसको पर यूनिट में निकालना है, पर यूनिट में कन्वर्ट करना है. पर यूनिट का मतलब कॉमन बेस हमने लिया, सपोज इसका 30 MVA 15 ये है बेस, हर एक का अपना अपना रेटिंग है. तो इसमें जो हाईएस्ट है उसको बेस मान लें. वी कैन टेक एनी अदर आल्सो. 50 MVA बेस भी ले सकते हैं कि हमने अगर 50 MVA को एक बेस, जस्ट सपोज करिए 50 MVA, अगर 50 MVA को बेस माना और 50 MVA ही उसका पावर है तो हम कहेंगे 1 पर यूनिट पावर है. अगर हमने 50 और 50 की जगह अगर हमने 100 MVA बेस मान लिया और पावर 50 है तो हम कहेंगे 0.5 पर यूनिट है. तो इस तरह, तो यहाँ जो ये इसमें हम वी कैन टेक एनी कॉमन बेस. तो यहाँ हमने पूरे सिस्टम का बेस 30 MVA ले लिया बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट वन इसमें से. तो हमारा जो पर यूनिट जो पावर है हमेशा 1 से कम 0.9 0.8 0.3 ऐसा आएगा. अगर हमने ये वाला ले लेंगे तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, 2 पर यूनिट आ जाएगी. जैसे हमने मान लो 15 MVA बेस मान लिया, पूरे सिस्टम का बेस 15 MVA मान लिया, तो ये इसका क्या होगा, हम ऐसा कहेंगे कि इस जनरेटर को, दिस जनरेटर इज जनरेटिंग 2 पर यूनिट पावर. तो 2 ना कहने की बजाय इसलिए हाईएस्ट मानते हैं, उसके रेफरेंस में कितना है 30 MVA पर यूनिट मान लिया, बेस MVA 30 मान लिया. और ये ट्रांसफॉर्मर देखिए, ट्रांसफॉर्मर क्या था 3311 kV है, तो इस साइड वोल्टेज 11 kV पर यूनिट मान लिया, इस साइड वोल्टेज 33 kV. मतलब अगर इसका वोल्टेज 10.5 kV है, यहाँ वोल्टेज ये जनरेटर वोल्टेज 10.5 kV कर रहा है और बेस 11 kV है, तो 10.5 डिवाइड बाई 11, 10.5 डिवाइड बाई 11 वी कैन से 0.98 पर यूनिट यहाँ पे वोल्टेज है. ओके, तो इस तरह हमने इसलिए बेस को हाईएस्ट MVA बेस मानते हैं और ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंगली इसका पर यूनिट वोल्टेज मानते हैं. 11 kV इधर, 33 kV इधर. अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन का 10.5 ओम पर फेस इसकी इम्पीडेंस है, पर फेस इम्पीडेंस 10.5 ओम है, इसको पर यूनिट में निकालना है. तो पर यूनिट में इम्पीडेंस निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला आपने ऊपर देखा, देखिए ये फॉर्मूला, पहले तो बेस इम्पीडेंस मीन्स ये एक्चुअल इम्पीडेंस और ये बेस कितना 30 MVA माना था, तो यहाँ 30 MVA अकॉर्डिंगली, या इसमें करेंगे 30 MVA तो VA और 10⁻⁶. यहाँ बेस वोल्टेज 11 kV था तो ये 11 10⁻³ का स्क्वायर, और यहाँ जो इम्पीडेंस गिवन है वो लिखेंगे तो ये पर यूनिट इम्पीडेंस आ जाएगा. तो सी हियर, ये सबसे पहले ले लिया ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन 10.5 था, 33 kV था, 33 kV, 33 का स्क्वायर और ये MVA था 30. तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब आप कहेंगे ट्रांसमिशन लाइन की पर यूनिट इम्पीडेंस 0.564 है, 0.564 पर यूनिट इम्पीडेंस. ऐसे ही ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस देखिए 15.2 गिवन है. ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस इज गिवन, ट्रांसफार्मर 1 15.2
50.2 पर फेस ऑन हाई वोल्टेज साइड, इसकी इम्पीडेंस है हाई वोल्टेज साइड में 15.2 उधर मेजर की। मीन हमने इम्पीडेंस प्राइमरी पे भी मेजर कर सकते हैं, सेकेंडरी पे भी मेजर कर सकते हैं। हमने 33 kV साइड में मतलब हाई वोल्टेज साइड में इसकी इम्पीडेंस मेजर की तो 15.2 है। अगर हम रिफर्ड 11 kV पे करते तो दूसरा निकलता। अब इसको पर यूनिट में निकालना है तो क्योंकि ये हाई वोल्टेज साइड में है तो हमने हाई वोल्टेज वाला यूज करना 33 kV। तो ट्रांसफॉर्मर यूसी ट्रांसफॉर्मर 1 इतनी इम्पीडेंस गिवन है 33 kV, ये थोड़ी kV है, ये MVA ऑलरेडी MVA, ये MVA 30 माना था। ट्रांसफॉर्मर का हाई साइड में 33 kV है और लोअर साइड अगर होता तो 11 kV रखते हैं यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस आ गया पर यूनिट में, इट इज पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर 3 ये भी हाई साइड में गिवन है, तो ये 16 ओम गिवन है, ये हाई साइड में हाई टेंशन साइड में गिवन है, हाई वोल्टेज साइड में, तो ये हाई वोल्टेज रखेंगे। अब जनरेटर ये एक तो ये आप पर फेस में कन्वर्ट करके फिर करें या द फॉर्मूला में ही आपने और देखिए अगर हमने यहाँ पर फेस में कन्वर्ट किया होता तो ये केवी, ये लाइन टू लाइन केवी 1/√3 हो जाता और ये बाई 3 हो जाता, तो 30 MB का 10 MB रह जाता और ये √3 का स्क्वायर करते हो 1/3, तो ये 1/3 कैंसिल हो जाता, 3/3 कैंसिल हो जाता दोनों जगह से। इसलिए ये पर फेस में करा या 3 फेस में करा कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए जनरेटर 1 का जो इम्पीडेंस गिवन है ये 1.6 ओम देखिए गिवन है। अभी आप फिर ऊपर आए, आप ये देखेंगे ये गिवन प्राइमरी साइड में जनरेटर 1 इसकी रिएक्टेंस प्राइमरी साइड में कनेक्टेड है 1.5 ओम 1.6 ओम, तो ये जनरेटर 1.6 ओम, तो ये प्राइमरी साइड में तो 11 kV लिया, तो ये पर इम्पीडेंस आ गया। ऐसे हर एक डिवाइस का जनरेटर 2 का भी लो वोल्टेज साइड में कनेक्टेड है उधर। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द पर यूनिट रिएक्टेंसेस। और उसके बाद हमने जो वो ग्राफ का फिगर था उसको ऐसा बनाया, जनरेटर 1 इसकी पर यूनिट इम्पीडेंस, जनरेटर ये ट्रांसफॉर्मर इसकी पर यूनिट इम्पीडेंस, ट्रांसमिशन लाइन की पर यूनिट इम्पीडेंस एंड दूसरे ट्रांसफॉर्मर 2 का पर यूनिट इम्पीडेंस, एक जनरेटर का पर यूनिट इम्पीडेंस, दूसरे जनरेटर का पर यूनिट इम्पीडेंस। तो हमारा ये ओवरऑल सिस्टम बन गया। इसको सॉल्व करना आसान है, आप चाहे आप लोड फ्लो स्टडी इस पर करना चाहें या बाईबस बना के करना चाहें, या इसमें देखिए बस 1 2 3 लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या नॉर्मल वे में सॉल्व करना चाहें यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि इसमें से आपने ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया। तो एनी टाइप ऑफ एनालिसिस कैन बी डन। इन फैक्ट in our case we are more interested in the why the modeling is being done. Modeling is done so as to study the detailed analysis of oscillations, mainly the subsynchronous oscillations which we have studied in the 4th unit. तो उसका जो 4th यूनिट में हमने SSR स्टडी करना हो, वो भी शॉर्ट सर्किट स्टडी करना हो, लोड फ्लो स्टडी करना हो, हम सब पर यूनिट सिस्टम ही यूज करते हैं। बट मॉडलिंग इज मेनली हेल्पफुल फॉर the helpful in the SSR studies. So that's why we will study the modeling of the generator. We will study the modeling of the turbine. You have already seen. Mechanical system consists of the turbines: high pressure turbine, intermediate pressure turbine, low pressure turbine, then generator, rotor side, then the exciter. The actual mechanical parts, in terms of the mechanical parts, we have studied the modeling of the mechanical system. Now we will study the modeling of the synchronous machine, especially on the stator and rotor side. In electrical, by considering the electrical connections on the rotor side and the stator side, how the equation for fluxes can be written. We will study first the flux equations, then we will study the voltage equations, then overall system, that is the stasis model, can be developed. So first of all we will describe the
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन केस ऑफ ए बैलेंस सिस्टम यू नो IB IC is 0, sum of IB IC is 0 in case of balance. In case of a unbalanced system, this is not 0. In the neutral, current will be IE plus IB plus IC. So this current flows into the neutral, called the zero sequence current. Anyway, now our synchronous machine. Earlier, if you remember, we represent synchronous machine by unit of a voltage source. देखिए ऐसा करते हैं, एक voltage source है, उससे एक reactance connected है, बस. Simply be the equivalent model of the synchronous machines, whichever we have considered so far, is represented by only a voltage source in series with a reactance called excess synchronous reactance. In case of short circuit studies, this excess synchronous reactance become the transient, subtransient reactance, then transient reactance, then a steady state reactance. Depending upon the analysis, हमने subtransient एनालिसिस करना है या ट्रांजिएंट एनालिसिस या स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना. मींस अगर हमने स्टार्टिंग में देखना है, स्टार्टिंग में व्हेन इट इज ए 50-60 मिली सेकेंड, देन वी कंसीडर इट ए ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. अगर हमने 5-7 साइकिल के बाद 100 मिली सेकेंड के बाद के अराउंड एनालिसिस देखनी है, देन वी कंसीडर अ ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. एंड इन स्टेडी स्टेट इज ए एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस. बट that is the very simplified model. That model is not applicable. That model is not giving the accurate good result or any result which we require if we have to analyze in terms of different oscillations. Different oscillations means, देखिए, as I told, in case of SSR, we told generator rotor may try to oscillate at its own natural frequency in addition to the actual. रोटर 50 हर्ट्ज पर रन कर रहा है, रोटर इज रनिंग से 1500 आरपीएम. इन एडिशन टू द 1500 आरपीएम लाइक दिस, इट मे ऑसिलेट लाइक दिस. 15 पे तो रन कर ही रहा है ऐसे, इसके अलावा अपने पोजीशन पे ऐसे भी रन कर रहा है, ऐसे कर करके 50 पे जा रहा है. सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन साइड, देयर कैन बी नंबर ऑफ ऑसिलेशन. इन द टरबाइन आल्सो देयर कैन बी नंबर ऑफ नेचुरल ऑसिलेशंस. So to study those natural oscillations, we cannot take the simplified model of the machine. Then we have to take the detailed model. अब in case of a detailed model, हमने this type of synchronous machine is there, where it is a rotor. It is a rotor, and here there are 3 windings. 3 windings may be like this: phase A winding, phase B winding, phase C winding. Phase A, phase B, phase C, they are a 3-phase winding displaced by 120 degree. Okay, ये 120 degree में phase difference पे windings है. In fact, this is showing it is a phase A axis. इसका मतलब ये जो winding हमने ऐसे दिखाया है phase A की winding. In fact, this winding is from here to here. ऐसे एक winding होगी जिसमें फ्लक्स जो है, if the current flowing into this winding from here to here, there is a winding. If the current flowing into this winding, then flux will be into this direction. फ्लक्स हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगा. सिमिलरली फेज बी, इस डायरेक्शन में एक वाइंडिंग होगा फेज बी. इफ द करंट फ्लोइंग इनटू दिस, देन फ्लक्स विल बी इनटू दिस डायरेक्शन. तो हमने इस तरह ए बी सी इसको बाहर दिखा दिया है. इनफैक्ट दे आर ऑन द स्टेटर. स्टेटर में फेस ए बी सी 3 वाइंडिंग है. सो इन द फेस ए, दिस इज ए फेस ए, this is direction of phase A, phase B, phase C. There are 3 equations of 3-phase equation, phase ABC. Now on the rotor, this is a rotor. रोटर पे ये वाइंडिंग होता है. रोटर में फील्ड वाइंडिंग होता है. फील्ड वाइंडिंग भी जिस तरह यहाँ से एक ऐसे करके आपका ये देयर आर 2 टर्मिनल, जिसपे डीसी करंट ऐसे फ्लो होगी. 2 टर्मिनल, एंट्री एंड exit. So in this, when the current flowing into the rotor winding like this, rotor winding इसके ऊपर ऐसा हो रही है, तो flux will be in this direction. Flux will be in this direction. So there are 2 axes on the rotor. This axis is the D axis, small d axis. This axis is the Q axis, small Q axis.
So there are two axes, D and Q axis, and when rotor is rotating with speed, called the synchronous speed or any other speed, because during the disturbance, this may have, in addition to the synchronous speed, there will be other vibrations also. That's why these axes, D and Q axis, they are also rotating with that at its rotor speed. So there is a now. So on the rotor, there is a D axis and Q axis. In addition to the field winding, in the rotor there are other winding. A damping winding also. Damping winding is also there. Okay. So when damping winding is also there, the damping winding can be distributed from here to here. ऐसा damping winding यहाँ से यहाँ distributed है. And damping winding यहाँ से means यहाँ से ऐसा. So what the damping winding do? The damping winding का purpose क्या है? During disturbance, it try to damp out the oscillations. और स्टार्टिंग में भी इसे काम आता है when the synchronous. Anyway, now say this damping winding is distributed throughout this on the rotor. So this can be represented the two winding, one is in the D axis, another is the Q axis. Means जो ये winding, इस पे जो winding होगा, वो winding को कुछ turns some of the turns we can consider in the D axis, some of the turns can be considered in the Q axis. So this is the damper winding. Damper winding is always, it is a short circuit winding. इसमें हमारा जो है short circuit winding होती है. Means ये यहाँ की winding short circuit कर देते हैं. So damper winding is represented by the say H and K. H and K. This is the field winding. Field winding like this. इसमें जो ऐसा है फील्ड में करंट जा रहा है IF और ये फील्ड वाइंडिंग होगी. डैम्पर वाइंडिंग रिप्रेजेंटेड बाय द टू वाइंडिंग बिकॉज डैम्पर वाइंडिंग कैन बी resolved into D axis and Q axis both because they are uniformly from here to here from throughout the pole. तो इसका pole को हमने along the D axis and along the Q axis. So this is the H and K are the two damper winding. In addition to this, we can consider one more damping winding because इसमें देखिए eddy current is also from rotor के अंदर. Although whatever we do the laminations or whatever the material can be there is always some losses. Hysteresis, this eddy current and iron losses are always possible, and they behave, eddy current or iron losses, they behave in such a way to damp out the oscillations. So to represent those damping, we can consider one more component, that is the K. H, G, H, K and G. One more. So there are in this way there are three damping winding. तो हमारा दो तो एक्चुअल वाइंडिंग की वजह से है, एक एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस की वजह से. So there are three damping winding, H along the D axis, two along this axis, and one is the field winding. So in this way you can see now on the stator there are three winding, on the rotor there are four winding. Now we will develop the model. We will do, D and Q axis are the rotor axis. D axis along the rotor, this along the rotor, and this is perpendicular to this rotor side. So it is a Q axis. And these ABC are the stator side. Now we will convert this into the, ये जो हमारा ABC है, this can be converted to, ये देखिए ABC, it is a rotatory frame of reference. ABC थ्री फेस है, इस फेस A आया, फिर फेस B, फिर फेस C, ऐसे हमारा सपोज ऐसा रोटेट कर रहा है. Now what we will do, we will first of all this will convert into alpha beta. Alpha beta means इसको स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जैसे ये थ्री फेस ABC है तीन, इसको हमने अल्फा बीटा दो फेस में, थ्री फेस टू, वी विल कन्वर्ट टू टू फेस बिकॉज यहाँ भी रोटर में भी हमारे एक्चुअली में दो D एक्सिस और Q एक्सिस है. ऐसे इसमें हमने अल्फा और बीटा टू एक्सिस में, थ्री एक्सिस को हमने टू एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे इसको. एंड दी टू एक्सिस मे बी डिफरेंट देन दिस D and Q. Now and those alpha beta axis, they can be stationary frame of reference, means
स्टार्टिंग स्टेशनरी, देन वी विल कंसीडर रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक हमारा अल्फा डी और क्यू क्या है, इसी का ए बी सी को हमने टू फेस में डी और क्यू ले लिया और ये सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रहा है। मींस स्टेटर फ्रेम ऑफ डी एंड क्यू आर द टू एक्सिस विच आर with respect to stationary frame of reference, with respect to the stator rotatory frame of reference। स्टेटर की जो एक्सिस है वो डी और क्यू है, कैपिटल डी और क्यू है। रोटर की एक्सिस है वो स्मॉल डी और क्यू है, और ये रोटर की स्पीड से रोटेट कर रही है डी और क्यू, और कैपिटल डी और क्यू स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। आई थिंक यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाई वी आर डूइंग दिस। पहले हम दोनों को अलग अलग नहीं लेते थे, क्योंकि उस एनालिसिस में हमने माना था they are synchronized, they synchronously coupled to each other, they are synchronized to each other, एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड है रोटर और स्टेटर। अब इसमें तो हम स्टडी यही कर रहे हैं कि उनके बीच का, रोटर और स्टेटर के बीच का जो डिकपलिंग हो रहा है, या डिकपलिंग नहीं कर रहे हैं, ऑसिलेशन जो हो रहे हैं आपस के बीच में, सो दे आर नॉट फॉर दैट ड्यूरिंग ऑसिलेशन दे आर नॉट एक्चुअली कपल्ड। तो हमने वही एक्चुअल ऑसिलेशन से स्टडी करना है स्टेटर और रोटर के बीच में, इसलिए हमने दोनों एक्सिस को separately D or Q and capital D and Q. Okay, is it clear or not? Yes sir. हाँ, अब इसका हम डिटेल देखिए। नाउ तीन एक्सिस इसकी है हमारी ABC की, और 3 कॉइल ABC की थी, 4 कॉइल रोटर साइड में होगी। इसका डिटेल मॉडल बनाएंगे। डिटेल मॉडल कैसे बनाते हैं, जैसे हमने नॉर्मल जब सिंगल होता था तो phi इक्वल टू LDI ओवर DT। अगर एक ही कॉइल होता, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, 3 फेज मशीन में पर फेज बेसिस पे करते थे, तो एक ही कॉइल हो गई, पर फेज बेसिस पे करेंगे। और हम उसमें क्या फॉर्मूला लगाते, फ्लक्स इक्वल टू LDI ओवर DT, उसके बेसिस पे मॉडलिंग कर देते थे। अब इसमें हमारी कितनी इक्वेशंस हो गई, नंबर ऑफ चार तो ये कॉइल हो गई, और 3 ये 7 कॉइल्स हो गई, 4 रोटर पे और 3 स्टेटर पे, 7 कॉइल हो गई उनके बीच का, और सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं है, तो हर एक का सेपरेट फ्लक्स इक्वेशंस लिखेंगे, और फिर LDI ओवर DT लगाकर ओवरऑल हम स्टेट स्पेस मॉडल लगाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज ए मॉडलिंग ऑफ द रोटर साइड, मॉडलिंग ऑफ द रोटर साइड सर्किट। ऐसे ही फिर हम उसकी डिफरेंशिएट करके उसकी वोल्टेज इक्वेशंस लिखेंगे। तो आई थिंक दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडलिंग। ठीक है, इसमें यहाँ तो कुछ पूछना है, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास we can describe, we can develop the model in detail. Yes, do you want to ask anything? No sir. So